Hi guys, so it's Ramadan time and we are fasting. So कुछ अच्छा चटपटा खाने में अच्छा लगता है, मजा आता है. Different types of salads and all. So I am trying this one today. So as you can see, I have already chopped the ingredients and I'm going to mix all of them together. So onion, this is cucumber and tomatoes. So ये तीनों I'm gonna mix. I'm gonna add salt to your taste. जितना नमक आप खाते हैं आपके स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं. I cannot taste right now, so I cannot really figure मैं क्या कौन सा ingredient कितना डाल रही हूँ. But एक अंदाजा होता है आपको अगर आपने ये सैलेड में बहुत बार बना चुके हैं. सो आई हैव एन आइडिया. I'm gonna add a little vinegar to it. बाद में once you're done with our रोजा इफ्तारी के बाद I'll once check on the taste. अभी फिलहाल I'm just keeping it ready. So ये मैंने लाइम स्क्वीज करके डाला है इसके अंदर. मुझे रमजान में सहरी में स्पेशली ऐसी चटपटी चीजें खाने में बहुत मजा आता है. बिकॉज सुबह 4 बजे आपका खाने का कुछ मन नहीं करता है. सो दी सैलेड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज एटलीस्ट ये एड-ऑन्स मुझे थोड़ा सा मेरी हंगर मेरा एपेटाइट जगा देते हैं. लेट्स जस्ट मिक्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर. Onions, tomatoes, cucumber. Now I'm going to add धनिया into it. Coriander से एक flavor और एक aroma आता है, which is amazing. और ऐसा सैलेड आपको immediately खाने का दिल करता है. ऐसा कुछ नहीं है. It's not even an hour left for iftari. So we'll have it for dinner. So I think we have enough vinegar and lemon juice niche. I've added pepper and salt to it. So I'm going to just keep it like that for an hour or so. And then later after iftari, I'll check on the taste. किस चीज की कमी रह गई है, I'll add that. फिलहाल let's just keep it like that. Salad is ready.